Hi everyone, I am Dr. Apala and welcome to this new session where we will clear all the doubts related to the coaching aspect of UPSC. Whether coaching is required or not, which coaching to take, whether to come to Delhi or not, and whether to go for online coaching or offline coaching. So I hope by the end of this video you have a little mental clarity on the entire coaching arena of UPSC. So the first question and the first most major question that is being asked is whether to take coaching or not. So for that I'd say that it depends. See, there are two types of people who enter this UPSC journey. The first one is people with zero clue about UPSC like me. So I had to take coaching because that worked as a starting factor for me, just a starting push for me to get me initiated into UPSC. तो कोचिंग ने एक तरह से मुझे UPSC में इनिशिएट किया. But if you're someone who has certain background, who has certain people in your life जो कि आपको गाइड कर सकें, थोड़ा एक्सप्लेन कर सकें. बहुत लोगों के सिबलिंग्स होते हैं, बहुत लोगों के सीनियर्स होते हैं. So if that is the case, then definitely coaching can be avoided. ये बात ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोचिंग बस एक गाइडिंग फैक्टर की तरह काम करता है और ज़्यादा से ज़्यादा कोचिंग एक डायरेक्शनल स्ट्रेंथ दे सकता है आपको. बट एट द एंड ऑफ द डे आपको सेल्फ स्टडी ही करना पड़ेगा. बिकॉज अनलाइक आवर 11th and 12th क्लास कोचिंग्स ऑफ नीट एंड जेई, यूपीएससी एक बहुत ही डिफरेंट एग्ज़ाम है, बहुत डायनेमिक एग्ज़ाम है और इसमें स्पून फीडिंग बहुत ही लिमिटेड लेवल्स तक हो सकती है. सो अगर आप इस नोशन से आएंगे कि कोचिंग जाके आपको सब आ जाएगा और तुरंत ही इस एग्ज़ाम के सारे सीक्रेट्स रिवील हो जाएंगे, तो ऐसा भी नहीं होगा. कोचिंग को एक सपोर्टिंग फैक्टर की तरह लीजिए अगर आपको लेना ही है. बट एट द सेम टाइम आई से दैट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि अगर आप कोचिंग नहीं ले रहे हैं तो आप कुछ बहुत बड़ा मिस आउट कर देंगे. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ whether to come to Delhi or not. So as we all know that Delhi is the UPSC hub and we have Old Rajendra Nagar and Mukherjee Nagar and these are literal hotspots of UPSC. So इसी नोशन के साथ मैं भी आई थी ओल्ड राजेंद्र नगर and I shifted there and I stayed there for an year. So I talk about myself that staying in Old Rajendra Nagar for me particularly was not very fruitful because as I mentioned I did not have many friends. I used to feel very depressed in Old Rajendra Nagar and मेरी पढ़ाई भी नहीं हो पाती थी वहाँ पे. I would always feel very troubled in the head वहाँ पे. तो what happened that one day my parents came to visit and when they saw me they said just pack your bags and we are taking you from here. तो मैंने बैग पैक किए और मैं घर आ गई. एंड इन फैक्ट जब मैं घर आई दैट वाज द टाइम व्हेन आई एक्चुअली बिगैन स्टडीइंग प्रॉपरली, क्योंकि एक इमोशनल स्टेबिलिटी थी एंड मे बी स्टेइंग एट होम सूटेड मी मोर. बट एट द सेम टाइम आई से दैट बहुत सारे सिचुएशनल फैक्टर्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू हैव अ रूम ऑफ माई ओन इन माई हाउस बट एट टाइम्स दैट इज़ नॉट पॉसिबल. तो अगर आपके घर पे पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है तो आप डेफिनेटली दिल्ली आने का ट्राई कर सकते हैं. बट इफ़ यू आर समवन हु हैज़ अ कंफर्टेबल स्टे एट होम एंड आप दिल्ली आना चाह रहे हैं सिर्फ दिल्ली आने की वजह से, तो आप इसको आराम से इवैल्यूएट करें एंड एनालाइज करें, क्योंकि कमिंग टू दिल्ली ऑल्सो इज़ वेरी फाइनेंशियली ड्रेनिंग. दैट इज़ वन थिंग दैट वी ऑल नीड टू कीप इन माइंड. तो जो भी सिचुएशन आपको लगती है उस हिसाब से आप डिसाइड करें. But I'd say that staying at home and preparing for home was very comfortable for me. सारी ही resources online available हैं आजकल, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है. There are courier facilities. You can give your tests online. Mains test series मैंने सारी online दी थी. So that worked well for me. But you can decide what works well for you. So the next question here is whether to go for online coaching or offline coaching. So I'd say that there are pros and cons of both. Offline coaching का ये pro रहता है that you go and get to sit in a class and have this daily schedule of physical learning apart from mental learning.
बट ऑनलाइन कोचिंग का ये फ़ायदा है दैट यू एंड अप सेविंग अ लॉट ऑफ टाइम, ट्रैवल टाइम बच जाता है आपका डिस्ट्रैक्शन टाइम बच जाता है, एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. आई थिंक फॉर मी हम बहुत बार टाइम वेस्ट ही कर देते हैं जब हम जाते हैं कोचिंग, एंड वहाँ वी एंड अप स्टैंडिंग टुगेदर एंड वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम. So if that can get saved, then anything is fine. But I'd say online coaching is as good as offline coaching. Coming to the last aspect of which coaching is good. So I'd say that any and every coaching has good teachers, has good aspects, and has not so good aspects. So for that, don't run behind anything in the market. जो भी आपको आपके लिए सूटेबल लगे, जिसमें भी आपको आपके सब्जेक्ट्स के टीचर्स मिल रहे हों, आप वो कोचिंग ज्वाइन करें. बहुत ज़्यादा भागे ना कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के पीछे, बहुत ज़्यादा फोमो ना फील करें कि मेरा फ्रेंड उस कोचिंग में जा रहा है बट आई एम ओनली गोइंग इन दिस कोचिंग. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे सारे कोचिंग का मटेरियल और सारे कोचिंग का काम सेम ही होता है एक तरह से इस एग्ज़ाम में, और आपको सेल्फ स्टडी से ही ये एग्ज़ाम क्लियर करना होगा. तो आप जिस भी कोचिंग में हैं आप उसमें खुश रहें, आप अटेंड करें क्लासेस, एंड डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ एनीथिंग एल्स, एंड नो नीड टू रन बिहाइंड ऑल कोचिंग्स. So that was all for today's session. If there's something more on which you need clarity, then put it down in the comments below. I try to answer them in the next video. Thank you.